Welcome students to this live session on subject Strategic Cost Management and Performance Evaluation. I am faculty of Board of Studies, here Deepak Gupta. Now, about the subject. Before discussing with you, it is very important to understand the importance of the subject. SCMPE subject not only includes strategic aspects of management accounting but also includes performance management and behavioral management accounting with highly focus on customer, supplier and internal process effectiveness. ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके मेजरली जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 कंपोनेंट हैं और उसमें है एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. फर्स्ट कंपोनेंट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सेकंड इज स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स एंड थर्ड इज behavioral aspects. Whenever you are writing an answer, please try to maintain your focus on these 3 aspects. जब भी कभी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है, इसकी लिंकिंग कहां से है, फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन हैज बीन लिंक्ड. आइदर it may be from performance management or either it may be linked through strategic aspects or behavioral aspects. For performance measurement, there may be model like balanced scorecard, Fisher Moon model, performance prism, performance pyramid, etc., where you have to evaluate performance based on financial and non-financial performance measures. If I am going to discuss with you about strategic aspects, then I have to go to strategic management concepts like internal environment, external environment, competitive advantage, so on. And regarding behavioral aspects, it is like motivational things, goal congruence, or these types of concepts normally tested in budgetary control chapter or your transfer pricing chapter. That's why it is very important to first understand the subject SCMP and its components. Okay, now what is relevance of SCMPE in today's scenario? Today's scenario, आज का जो सिनेरियो है उसमें SCMPE की रिलीवेंस क्या है? CEO, SCMPE का जो फोकस है वो CEO पर है, ठीक है. CEO takes on the primary responsibility of managing all business activities and it is top official. Okay, whenever you are writing an answer, think from CEO's perspective. Okay, here that's why here you have to go beyond your financial thinkings. It means you have to incorporate non-financial considerations also by considering various stakeholders of organization. सीईओ का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन और टॉप ऑफिसर होता है. ओके, यहां पर SCMPE
सब्जेक्ट जो है आपको सिखाता है कि किस तरीके से सीईओज डिसीजन लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल कंसिडरेशंस तो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन नॉन फाइनेंशियल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको सभी स्टेक होल्डर्स को कंसिडर कर कर चलना होगा। ओके, whenever you are going to take any decision, you have to consider not only financial but also non-financial factors also. Okay, now for this subject, a prior knowledge of cost and management accounting subject and strategic management subject is necessary. अगर आपको SCMPE के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको जो प्रायर आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी यहां पर अप्लाई करना होगा। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पर यहां पर होता है SCMPE के में फाइनल में। Here I want to show you one thing. See this question. Question says, 1 minute. State the difference between just-in-time inventory versus economic order quantity. They have asked or they have correlated the concept of just-in-time with intermediate concept that you have learned. इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट्स इक्वली एप्लीकेबल हैं यहां पर। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू ऑन पीपीटी। ओके, सेक्शन वाइज वेटेज syllabus is divided into 3 parts. First part is strategic cost management and decision making. Here weightage is 35% to 40%. Part B is performance evaluation and control. Here weightage is 35% to 40%. And case study, here weightage is 20% to 30%. Okay. If a question paper is having 120 marks, then up to 48 marks question can be asked from part A and part B, and up to 36 marks question can be asked from part C, that is case study. यहाँ पर जो वेटेज है 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है और सेक्शन बी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, वेयर वेटेज जो है वो 35 to 40% है। इट मींस अगर कोई 120 मार्क्स का पेपर है तो 120 का 40% अप टू 42 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक पार्ट से पूछे जा सकते हैं। और पार्ट सी वेयर वेटेज इज 30%, up to 36 marks question can be asked from here, but don't ignore internal limit. Strategic decision making is having a maximum weightage of 15%. It means up to 18 marks question can be asked from decision making or managerial control, again where there is internal limit of 15%. Now skill assessment. Skill assessment is very important.
स्टूडेंट्स कहते हैं कई बार सर मार्क्स नहीं आ रहे, सर आंसर कैसे लिखना है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो है स्किल असेसमेंट। दिस स्किल असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि हमें ये आंसर कैसे लिखना है, या इस ग्रिड के बारे में ही मालूम नहीं है। ठीक है, नाउ आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ वर्ब्स होती हैं, लाइक कैलकुलेट, आइडेंटिफाई, स्टेट, लिस्ट, एडवाइस, रिकमेंड। आपको आंसर जो है वो वर्ब्स के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन ये वर्ब्स क्या हैं, इसको कैसे समझें। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू स्किल असेसमेंट ग्रिड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ आ गया तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, it is therefore it is very very important to understand skill assessment grid. Level 1 is knowledge and comprehension, where you have to maintain your focus on memorization of concepts. Here weightage is 10% to 15%. अगर एक क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का है तो अप टू 10% टू 15%, अप टू 12 टू 18 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है लेवल 1 से। ओके, दिस इज योर लेवल 1। हियर फोकस इज ऑन memorization of concepts like explain just in time, define just in time. Level 2 is focus on application and analysis. Here weightage is 45% to 55%. Up to 66 marks question can be asked from this part. Here you have to do calculation, analysis and application. Level 3 is evaluation where weightage is 35% to 40%. It means up to 48 marks question can be asked from here. What is evaluation? Level 3 in level 3 you have to go beyond your theoretical knowledge. You have to consider non financial factors also while making decisions, or qualitative factors. Therefore this portion is very very important to score good marks. You have to clearly understand the difference between level 1 and level 3. क्वेश्चन पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन आस्क्ड किया जाता है या कोई पूछा जाता है और कहा जाता है कि एडवाइस करना है आपने, लेकिन उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि हमें जो सॉल्यूशन है वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हमें एडवाइस पूछा गया है तो स्टूडेंट्स लिख कर आते हैं उसके अंदर नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ जस्ट इन टाइम। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच वर्ब वन बाय वन। ओके, level 1 is having verb list, state, define, describe, distinguish, explain, identify, illustrate. Whenever a question says list important factor
of participative approach. List means list. As it says, just provide a list only. Each of the item on list should be expressed in terms of full sentence. It means list. You have to give all items one by one in sentences. Okay. Again, this is your theoretical knowledge. लिस्ट लिस्ट अगर कभी आए तो आपको सारे जो भी उसके पॉइंट्स हैं वन बाय वन आपको लिखने हैं, लाइन बाय लाइन. ओके. स्टेट मीन्स give exact meaning. Here you have to say what you need to say. आपको वही लिखना है जो उसने पूछा है. सिंपल. ओके. define is, this is definition. It is dictionary meaning or your definition of some authors or some organization, etc. However, here you can use your own words. डिफाइन के अंदर आपको डेफिनेशन देनी है किसकी, जैसे किसी भी, जैसे TQM, टारगेट कॉस्टिंग. आइदर यू कैन राइट किसी ऑथर की भी डेफिनेशन दे सकते हैं आप, या मटेरियल में जो डेफिनेशन दी हुई है वो भी दे सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहां पर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ओके. डिफाइन मींस आपको डेफिनेशन तो देनी है लेकिन आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं. इट डजंट मीन कि डिट्टो सेम एज गिवन इन स्टडी मटेरियल. ओके. डिस्क्राइब मींस डिस्क्राइब EVA और डिस्क्राइब बियॉन्ड बजटिंग. Here you have to give key features. यहां पे आपको की फीचर्स देने होंगे डिस्क्राइब के अंदर. उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? ओके. डिस्क्राइब इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ लिस्ट और स्टेट. Distinguish, it is very easy. It means clearly you have to differentiate given things, two or three given things. यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा जो भी 2 या 3 चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन. Explain mean you have to given purpose of something. You have to elaborate, you have to further given details. आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी होंगी. एक्सप्लेन के अंदर आपको डिटेल्स देनी होंगी जो अभी आपने ऊपर की वर्ड्स में यूज किया है.
For explanation, it is necessary to write 2 or 3 sentences. एक्सप्लेनेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ सेंटेंसेस लिखें. अगर कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस से मीनिंग क्लियर नहीं होता तो दूसरा देते हैं, दूसरे से क्लियर नहीं होता तो तीसरा देते हैं. इट मीन्स यू हैव टू राइट टू एक्सप्लेन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर item. Identify means you have to select particular item after careful consideration. Identify which approach you are going to follow, whether it is a feed forward or feedback. Look at the question, then identify. Identify based on the facts given in the question. आपको ढूंढना है कि कौन सा अप्रोच लगाएं यहां पर, या कौन सा मॉडल लगा सकते हैं यहां पर. क्या कॉस्ट प्लस लगा सकते हैं या टारगेट कॉस्टिंग लगा सकते हैं. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस गिवन इन द क्वेश्चन. Therefore, identify means you have to carefully select based on the facts and circumstances given in the question. Illustrate. Now, illustrate क्या है? Illustrate means you have to give example. Whenever question say illustrate, in that case you have to give example. You have to explain by taking an example. Example may be any, but you have to explain through example. Or you can show through calculation, simple calculations. Okay, this is level 1. Level 1 is again based on memorization skills. Okay, now level 2. Here verbs are apply, calculate, demonstrate, prepare, reconcile, solve, tabulate, analyze, compare, discuss, interpret, produce. Okay, now apply means we will have to do it for real. We will have to do it for real, not just talk about it in theory. Okay, this is application. Calculate means do mathematical calculations. This is very easy. Demonstrate, it means we need to prove something to be true beyond any doubt. यहां पे आपको प्रूव करना है कि जो आपने बोला है या जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये सही है. लेकिन ये कैसे? हाउ यू विल प्रूव दैट व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट? देयरफॉर you have to give evidences. This verb is most likely to be used in situations where there is one correct answer, rather than where we are expressing an opinion.
ये वर्ब कहां पर यूज होगी? जहां पर मोर देन वन करेक्ट आंसर है। डेमोन्स्ट्रेट वहां पर यूज होगा जहां पर कई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे। देन यू हैव टू सेलेक्ट वन or two options which are right, which are correct based on the facts given in the questions. Again, you have to correlate with the evidences or facts given in the question. Now prepare means make or get ready for use. It means you have to take the relevant data, process it, arrange it, then provide it in a particular format. Process data, arrange the data, and provide it in the desired format. This is prepare. Reconcile means simply connect between two items. Solve means find answer. It is like as calculate. Tabulate means to make arrangement in table. Now analyze. This is very important. Analysis is very important. This is asking for a series of detailed explanations. This is asking for a series of detailed explanations, often opinions rather than fact. Suppose question says to analyze particular export decision. While calculating, you have identified labor is sunk. In that case, you have to give explanation why it is sunk. It is analysis is beyond calculation. Why calculation? Why cost is sunk? Why cost is relevant? Why cost is opportunity? You have to give explanations, opinion. Always, whenever you are answering a particular question, think the analysis given in a particular report, annual reports. In standard costing, calculate some variances, explain what we think they mean, relate them to each other, relate them to the context given in the question. In analysis, you have to correlate the figures. First, you have to explain why it is here, why it is not, and explain the
figures, specifically in standard costing. When one variance increase, other decreases, there may be some relation. Identify that relation, and this identification is analysis. Therefore, if a particular question says to analyze, then you have to analyze. अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आपको फिगर्स को कोरिलेट करना आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये आपने फॉलो क्यों किया है। अगर आप कहते हैं कि ये कोस्ट संक है, ये कोस्ट रिलीवेंट है, तो आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाई इट इज संक, क्योंकि संक क्यों है। और इसी तरीके से जब वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं, एनालिसिस करते वक्त सपोज एक वेरिएंस इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है, देयर में बी सम कोरिलेशन, देयर में बी सम correlation between the facts given in the question, then you have to correlate all facts given in the question and put in your analysis. This is analysis. Okay, now compare and contrast. Compare and contrast. It doesn't mean to give negative figures or negative answer. It means you have to show not only similarities but also differences. It means you have to give similarities and differences. Both. Next verb is discuss. Again, this is very important verb, discuss. Discuss means argument. जब हम किसी से कुछ डिस्कशन करते हैं, कोई फैक्ट डिस्कस करते हैं या कोई किसी भी पॉइंट पर कोई डिस्कशन करते हैं, तो पॉजिटिव डिस्कशन भी होता है, नेगेटिव डिस्कशन भी होता है। आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन के अंदर आर्ग्यूमेंट करना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कितने पॉजिटिव्स, कितने नेगेटिव्स, कितने या कितने पॉइंट्स आपके फेवर में जा रहे हैं, कितने पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में हैं, लेकिन आपने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन वाली फीलिंग देनी है आंसर लिखते वक्त। In order to discuss something, there need to be an argument. In other words, we need two or more differing or opposing viewpoints. Also, any discussion should, if possible, end with conclusion. आर्ग्यूमेंट तो होगा, लेकिन फाइनली आपको कंक्लूजन भी देना होगा जहां तक पॉसिबल है। ठीक है, थिंक अबाउट, सोचो क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन, वाई और वाई नॉट, वाई और वाई नॉट, मे और मे बी, मे और मे नॉट बी। थिंक, दिस इज डिस्कशन। जैसे मैंने अभी बोला कि आर्ग्यूमेंट के लिए ये ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितने पॉइंट्स दे रहे हैं। कितने पॉइंट्स का मतलब कि कितने किसी इशू के फेवर में है, कितने अगेंस्ट है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए पॉइंट्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, इंटरप्रेट। ओके, this is translation of intangible or familiar terms. It means translating from one form of word to another, where interpret is often the second stage of analysis.
अभी आपने एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन अब आप उसको उसका जो है ना कंक्लूजन निकालोगे। ठीक है, इनिशियली यू have done some calculation. After calculation, you did some analysis by correlating the figures. Now you will go beyond that analysis and will find the facts. Why this has incurred, why that has gone. ये जब आप सबसे पहले कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करने के बाद उन फिगर्स को कोरिलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये यहां क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, और अब इंटरप्रेट करेंगे तो उन फिगर्स को कोरिलेट करके एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि और एक रिजल्ट बताएंगे। Think about variances again. In order to produce variance analysis, first we calculate variance analysis, then we interpret them. There is thin line of difference between analysis and interpret. Interpret is second stage after analysis. First do calculation, then analysis, and after this interpretation. I can say analysis is comparatively easier than interpretation. Now produce. Produce is similar to prepare. Now I come to level 3. In level 3, there are 3 verbs: advise, evaluate, and recommend. Advise. Whenever you are going to make any decision, you have to consider non-financial factors also. This is very important. How you are going to give advice to your clients. Whenever you are framing answer of any question, think from the perspective of management accountants and assume you are management accountant and you are going to give advice to your client. अभी क्वालिटेटिव फैक्टर्स कैसे कंसीडर करें, क्या करें, ये कई बार स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से सजेस्टेड आंसर में या आरटीपीज में या मॉक टेस्ट पेपर में आंसर को ड्राफ्ट किया गया है। अभी मैं इसको एडवाइस को एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि मतलब एडवाइस होता क्या है और स्टूडेंट्स क्या लिख के आते हैं उसके अंदर। लेकिन इसके लिए मेरे को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो अभी थोड़ी देर में करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व। Before going to that particular question,
let us complete level 3 verbs. Advice is consider qualitative or non-financial factors along with financial factors. I will explain you through a question. Okay. Now evaluate कभी भी कोई चीज evaluate होगी तो स्टूडेंट आइदर या तो पास होगा या फेल होगा. ओके. स्टूडेंट आइदर या तो पास होगा या फेल होगा. तो ये क्या है? इवेल्युएशन. तो इसी तरीके से कोई भी डिसीजन होगा, बिजनेस डिसीजन होगा, तो आइदर वो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा. तो इसी तरीके से आपको या तो आपको पॉजिटिव भी देने हैं और नेगेटिव भी देने हैं. वेन एवर यू आर गोइंग टू इवेल्युएट a particular item, a particular decision, a particular thing, you have to give positives of that scenario, negatives of that scenario, and after that you have to conclude. This is evaluation. Again, it is not necessary how many points you are going to write in favor or how many points you are going to write against. Evaluation again maybe in financial or non-financial terms. Okay. Now recommend. We need to do a series of things. Identify and explain options. You have to find options. There may be n options, one option, two option, three option, four options. But here you have to evaluate each option. You have to evaluate each option and give conclusion. Give conclusion for that. First, find options. After options, evaluate each option. After evaluating, give conclusion or give your recommendation whether we are going to follow this or we are going to follow that. जितनी भी ऑप्शंस हैं आपको पहले फाइंड करनी है, फाइंड करके इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करके आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है. ओके. तो मैंने वर्ब्स के ऊपर काफी टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपको ये समझ आ गया तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, इतना मुझे मालूम है. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं एडवाइस वर्ब को समझने के लिए. This is November 22 exam and students, please
go through this question. Question number 3. This is question on just in time. Okay. मैं आपको खाली इसका जो बी पार्ट है खाली यही समझा के इसको क्लोज कर सकता हूं क्वेश्चन को, लेकिन मैं इसको आपको ए पार्ट भी समझाऊंगा। ठीक है। मे बी आप में से काफी लोगों ने इसको कर लिया होगा और आपको मालूम होगा, लेकिन इसको क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेरा पर्पस है वो ये है ताकि आप वर्ब्स की इंपॉर्टेंस को समझें। Why I have taken this question for doing solution? Because I want to make you understand that you are able to write answer in a correct manner. Basis of the verb. Okay. In this question, a new startup venture ABC Limited has successfully entered into their contract with an offshore pharmaceutical company to supply one of the high demand generic medicines. Expected demand for the medicine will be 98,000 units annually. The plant holds the maximum capacity to 25,200 units per quarter, but it can additionally produce 14,000 units per quarter in overtime. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपकी जो मेडिसिन्स की जो डिमांड है वो 98,000 यूनिट्स पूरे ईयर की है और प्लांट की जो कैपेसिटी है वो एक क्वार्टर की है 25,200 यूनिट्स और आप 14,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्वार्टर में ओवर टाइम से, मतलब एडिशनल 14,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं ओवर टाइम के थ्रू। Total fixed overheads are expected to be 16,80,000 for all the quarters. Each unit produced in overtime would incur an additional cost equivalent to 32% of the expected variable cost per unit of that quarter. Each unit produced in overtime would incur overtime cost कितनी होगी 30 equivalent to 32% of what of expected variable cost per unit of the quarter. Expected sales and variable cost per unit for all quarters are given as under quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Sales units 13,300, 23,800, 25,900, 35,000. Variable cost per unit 36, 36, 39, 42. The production manager has to decide about the production plan. The choices are, अब ये आपको सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का डाटा दिया हुआ है और अब चॉइस है, अब आपको चॉइस आपको सेलेक्ट करना है, एक डिसीजन लेना है। प्लान वन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोड्यूस एट कांस्टेंट रेट ऑफ 24,500 यूनिट्स पर क्वार्टर। आपको कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन करना है 24,500 यूनिट्स एक क्वार्टर का। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट विल बी 7.80 per unit of average inventory per quarter. Okay. Plan 2 is use a just-in-time system. Plan 2 is use a just-in-time system. Assume that there is no balance of opening inventory. Okay. ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई बैलेंस नहीं है और अब रिक्वायर्ड है calculate the incremental production cost and the savings in inventory holding cost by JIT production system, and B, advise the company on the choice of the plan. Okay. अब हमारे पास दो ऑप्शन गिवन है, या तो
traditional system, or either I have to follow traditional system, that is push system of inventory control, and second option is just in time system. This is pull system of inventory management. Therefore I have to select either options. There are two parts I am taking. First part is a calculation of incremental production cost, etc., and second point is advice. Okay, now let us take first part. Okay, सबसे पहले I will try to calculate statement statement showing inventory holding cost. Inventory holding cost. Okay, inventory holding cost under, this is my plan 1. Plan 1. Okay, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Opening, my opening inventory, then production, less demand closing inventory. Okay, question says this question is November 2022 examination question number 3. Okay, question says there is no balance of opening inventory. There is no balance of opening inventory. Let me show you. There is no balance of opening inventory. Okay, now production under push system is expected demand for the medicines will be 90
8,000 units annually. Expected demand for the medicines will be 98,000 units annually. It means एक क्वार्टर में हम 24,500 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. 24,500 units in each quarter. Okay. ये मैंने अपना प्रोडक्शन कर लिया 24,500 यूनिट्स का एक क्वार्टर के अंदर. ठीक है. और मेरी डिमांड क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है? सेल मेरी है 13,300, 23,800, 25,900 एंड 35,000. अकॉर्डिंगली आई विल राइट हेयर 13,300, 23,800, 25,900 and 35,000. My closing inventory will be 00211. This will be opening. And again, my closing inventory will be 11,200 plus 24,500 minus 23,800. It will be 11,900. Now this will be मेरी opening inventory of quarter third. 11,900 plus 24,500 minus 25,900. It will be 10,500. And opening stock will be 10,500 plus 24,500 minus 35,000. This is 0. Okay. In push system, I am having closing inventory in each quarter 11,200, 11,900 and 10,500. Or I can say my average inventory per quarter is 11,500 divided by 2. This is 5,600. 11,900 divided by 2. This will be my 11,2 divided by 2. This will be 11,550. 11,900 divide and 10,500 divided by 2. 11,200 and 10,500 plus 35,000 divided by 2. 10,500 plus divided by 2. 5,250. This is my average inventory per quarter. In quarter 1, my average inventory is 5,600. In quarter 2, it is 11,550, and in quarter 3, it is 11,200, and in quarter 4, it is 5,250. And accordingly, now I can calculate my inventory holding cost, and my inventory holding cost is here it has given inventory holding cost will be 7.80 per unit of average inventory per quarter. It means my inventory holding cost will be inventory
holding cost will be at the rate 7.8. This will be multiply. It will be 43,680. 11,550 into 7.8. This will be 90. 11,200 into 7.8. This is 87,360. 5250 into 7.8. This is 4950. And total of all these will be 43680 plus 90,87360 plus 40. This will be 262,262,080. This is my inventory holding cost in plan 1. Okay. Now, I will consider plan 2. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Okay. My demand is 13,300, 23,800, 25,900, and 35,000. Okay. Now, the plant question says the plant holds the maximum capacity to 25,200 units per quarter. प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 25,200. अब क्या हो रहा है कि जस्ट इन टाइम के अंदर जैसे डिमांड है वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब होगा क्या, जब जैसे ही डिमांड है वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहां पर जाके हम फंसते हैं. क्यों यहां पर जाके क्यों फंसते हैं हम? क्योंकि प्लांट की जो कैपेसिटी है मेरी मैक्सिमम कितनी है 25,200 यूनिट्स ओनली. इट मींस ये तो स्टॉक आउट की सिचुएशन हो जाएगी. but question says the plant holds the maximum capacity to 25,200 units per quarter, but it can additionally produce 14,000 units per quarter in overtime. और ये पर क्वार्टर में कितनी मैक्सिमम हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एडिशनली? प्लस 14,000 और कर सकते हैं. नाउ let's check production in normal time. Production in normal time. Okay. I can meet this demand easily. Similarly, I can meet this. Here, I can
meet up to 25,200. Again, here I can meet up to 25,200. Therefore, there is shortage of 700 units. Here shortage is 8 now 9,800 units. Therefore, I have to produce these units in overtime. I will produce these units in overtime. Therefore, I have to compute overtime rate for this. Okay. My variable cost is 36, 36, 39, and 42. Now, my additional cost for overtime, which is given in the question, 32%. 32% of expected variable cost. 32%. It means 36. This is 11.52. 11.52. 12.48. 13.44. अगर मैं जस्ट इन टाइम पर जाता हूं तो मेरे जो स्टॉक आउट की सिचुएशन बना था उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे को ओवर टाइम करना होगा, और ओवर टाइम करने के लिए मेरे को जो एडिशनल ओवर टाइम कॉस्ट है वो मेरे को ये पे करनी होगी 700 यूनिट्स पर 12.48 के अकॉर्डिंग एंड 9,800 यूनिट्स पर 13.44 के अकॉर्डिंग, एंड दिस विल बी माई ओवर टाइम कॉस्ट. Overtime cost will be 8,736 and 131,712, and total will be 140,448. Okay. Now, I will calculate additional variable cost if I am going to follow just in time method. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये क्लियरली दिया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है क्वार्टर वाइज जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, तो अकॉर्डिंगली मेरा पुश सिस्टम और पुल सिस्टम दोनों सिस्टम के अंदर मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो भी आएगा, क्योंकि my variable cost is moving based on quarter. Therefore, I have to consider the incremental impact of variable cost in just in time versus my traditional push system. Okay. Therefore, in quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, my production under plan 1 is 24,500, 24,500, 24,500, 24,500, or in total it is 24,500 into 4,
98,000. This is 98,000. And my variable cost is 36, 36, 39, 42. 36, 36, 39, 42. And accordingly, my cost will be 24,500 into 36. It is 8,82,000. This is 8,82,000. 24,500 into 39. It is 955,500. 24,500 into 42. It is 1029, and overall it is 955,500, 882, 882, 8. This is 37,48,500. Okay. Now up now production in plan 2. Production in plan 2 is my 13,300, 13,300, 23,800, 25,900, and this is 35,000. My variable cost again 36, 36, 39, and 42. My total cost will be 13,3 into 36 plus में 4,7,8,800, 23,800 into 36, 8,5,6,800, 25,900 into 39, 10, 100, 35,000 into 42, 1470. This is my 478,800, 856,800 plus 10, 10, 10, 14, 7, 18, 15, 700. My incremental production cost, my incremental production variable cost is 3,815,700 minus 3,748,500, 3,85700 minus 3,748,500, 67,200. Okay. Now, which one is better? Okay. This is your push system. This is your pull system, just in time. Okay. पुश सिस्टम में आपका जो कॉस्ट है वो आ रहा है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आपका आ रहा है 2,620,80, 2,620,80. ओके. जिट में आ रहा है आपका
Let us read first requirement of question. Question says calculate the incremental production cost. Okay, we have find the saving in inventory holding cost by JIT production system. Okay, calculation of the incremental production cost under JIT system. My incremental holding cost under push system is 262080, and my additional cost under plan 2, that is my just in time, my additional cost is 140448. 10448. 140 and 16. This figure is my on account of increase in variable cost. This is on account of overtime, and this is on account of inventory holding. Okay, now let us compare 262080 and 14048. 207648. Net benefit will be savings in just-in-time system will be 54432. ओके, जस्ट इन टाइम सिस्टम के अंदर मेरी सेविंग आ रही है 54,432 की. नाउ आई हैव टू गिवन एडवाइस वेदर आई हैव टू फॉलो जस्ट इन टाइम सिस्टम और पोस्ट सिस्टम. On the basis of financial analysis, it is you can easily follow just-in-time system, but here you have to give advice. Whenever you are going to give advice, you have to consider qualitative factors. For qualitative factors, you have to think beyond your calculations. Okay, suppose this company is going to implement just in time system on the basis of this computations, but here it is important to consider other factors like credibility or reliability of supplier. Here supplier's credibility or reliability is very important. If my supplier is not good, or I have not good relationship with supplier, then just in time system cannot be implemented. Similarly, it is very important to have electronic data interchange system, or ERP system must be there, because this is must for implementation of just in time. If I don't have such type of EDI system or electronic system, then it is not feasible to implement that proposal. Next, the quality of material is also very important. If I am not satisfied with the quality of material supplied by my supplier, then it will be very difficult to implement just in time system, because I
because I have to take delivery of my material directly at production floor, and at that time any defective material or any issue in material will be a big problem for me, and in that case my cost will be adversely affected. So, further, my labor must be versatile. My labor must be versatile, can do work in any department, or can do any type of work. Therefore, efficiency of labor, variety, the capacity of doing variety of work is necessary. Here, levels of demand. In that case, my entire system may get fail. Okay. Further, therefore, before implementation of just in time, it is very important to consider other impacts also. लेकिन जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि आपको ये फैक्टर्स जो हैं आपको कंसिडर करने होंगे जस्ट इन टाइम का डिसीजन फॉलो करने के लिए। लेकिन कभी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं कि मैंने अभी कुछ समय पहले किसी बच्चे से क्वेरी डिस्कस किया तो उसने मेरे को बताया कि मैंने उससे पूछा कि आपने एडवाइस एडवाइस में आपने क्या लिखा। तो स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि उसने एडवाइस में लिखा जस्ट इन टाइम क्या है, जस्ट इन टाइम के बारे में एक्सप्लेन किया। उसने बताया ओवर टाइम के बारे में, बताया कि ओवर टाइम ज़्यादा लगता है, ओवर टाइम कम लगता है, इस तरीके से करके, और होल्डिंग कॉस्ट के बारे में भी बताया। यानी कि उसने क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। ओके। अगर अगर इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ये पार्ट जो था एडवाइस वाला जो पार्ट था, इसके अंदर 3 मार्क्स का एडवाइस था। तो 3 मार्क्स का अगर एडवाइस था क्वेश्चन पेपर के अंदर तो उसको वहां पर कुछ मार्क्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने एडवाइस ही नहीं दिया, उसने बदले में लिखा जस्ट इन टाइम क्या है, यानी कि जस्ट इन टाइम क्या है ये सारा क्या लिखा उसने, ये लेवल 1 की वर्ब को यूज किया। एक्चुअली स्टूडेंट फेल्स टू राइट appropriate answer based on the verb. Here verb is advice is level 3 verb. Here he fails to write correct answer based on level 3 verb. He wrote answer based on level 1 verb. Um, you can see the level 1 verb based on memorization, and this was the skill which was not expected from the student. Therefore, I am again saying, please write based on the requirement of the question. Okay. Because this question is because part B is having of 3 marks, then you have to give any 3 points in brief. It is not necessary to write fully paragraph on each point. Give simple 3 points in brief, but
properly linked with the requirement of the question. Therefore, this entire calculation has no relevance for decision making, because other factor is having greater factor on our decision. Okay. Now, general guidelines for preparation. It is very important to give importance to conceptual theory part. Yes. यहाँ पे बहुत important है कि आप जो conceptual theory part है उसको importance दें. In November 18 exam, there was a question on target costing. In that particular question, I remember that something was in first part there was some calculation uh, regarding to compute reduction in labor time so that target costing proposal can be implemented. But in second question it was required that to implement that proposal, or to implement the changes suggested by the management, what are the necessary steps to be taken in that case. उस क्वेश्चन के अंदर समथिंग कुछ ऐसा था कि पहले पार्ट में आपको टारगेट कोस्टिंग के प्रिंसिपल्स के बेस पर आपको रिवर्स वर्किंग करके लेबर टाइम कंप्यूट करना था, और नेक्स्ट टाइम में था कि अगर हम टारगेट कोस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो मतलब क्या इम्पैक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. तो वो जो थ्योरी है, अगर उस थ्योरी के अंदर हमें लेबर से हमने लेबर को बोनस भी दिया, और बोनस देने के बाद भी हम लेबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज्यादा आवर्स काम करे टू मीट टारगेट कोस्टिंग टारगेट. We in that particular question we were expecting labor do more work so that we as a company can implement our target costing target. But to implement that target costing target, it was necessary to change production layout, or either use change management practices, or either use value engineering principles. But the same concepts were clearly written in the study material. मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन था वो कोरिलेट की इजीली किया गया था स्टडी मटेरियल की थ्योरी के साथ. कि स्टडी मटेरियल के अंदर क्लियरली लिखा है अगर आपको टारगेट कोस्टिंग को इंप्लीमेंट करना है तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्शन का लेआउट भी चेंज करना पड़े. हो सकता है कि अगर आपकी लेबर जो है वो आपसे लेबर को मैनेज करने के लिए आपको हो सकता है कि चेंज मैनेजमेंट का लीडर अपॉइंट करना पड़े. ये सारे पॉइंट्स वहां लिखे हैं. इट मींस अगर टारगेट कोस्टिंग का अगर कोई क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन के बेस पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो कहीं ना कहीं से उस थ्योरी से कनेक्टेड है जो कि मटेरियल के अंदर दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पार्ट. This may be somewhere, this may be anywhere connected in your examination question. Next, what if analysis while solving each problem. Okay, you have to do what if analysis. अगर ये होता तो मैं क्या करता, या अगर ये सिचुएशन होती तो हम क्या करते, या
तो हम कैसे सोल्व करते, आइदर इंक्रीमेंटल अप्रोच, आइदर रिलेवेंट कोस्टिंग अप्रोच। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। स्टूडेंट शुड मेक देयर ओन नोट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यू शुड मेक योर ओन नोट्स। योर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स student take notes from their friends, their colleague, and use the same for their examination preparation. While after when they reach to examination hall, when they write answer, after when their result uh, uh, जब उनका जो रिजल्ट आता है वो डिक्लेयर होता है तो पता लगता है उनके मार्क्स ही नहीं आए। तो उसका रीजन क्या है कि जो नोट्स अगर सपोज आपके फ्रेंड ने बनाए थे, हो सकता है पढ़ाते वक्त हो सकता है उसने स्टूडेंट ने पढ़ते वक्त क्या है कि उस आंसर को कहीं ना कहीं पे फिल्टर कर दिया, और फिर उसके बाद जो आपने उसी से वो नोट्स ले लिए। फर्दर जब आपने कुछ पढ़ा तो आपने उसमें फिल्टर कर दिया, फिर एग्जाम में आया तो जाते जाते कुछ आप भूल ही गए, तो वो फर्दर फिल्टर हो गया, तो वो 10 में से 4 के बराबर ही रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। स्टूडेंट्स शुड मेक देयर ओन नोट्स ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, स्टूडेंट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, और ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम योर ओन। ओके, make a target of solving 200 to 250 problems over a period of time. You have to solve problems from your study material, your case study digest, RTPs, mock test paper. There are more than 300 questions. If you go through these questions, you are well prepared for the examination. Practice makes perfect. Do practice, practice, and practice. Practice is very important. Don't ignore. Okay, improve your speed by practice. As you do more practice, your speed will automatically increase. And again, I am saying try to solve each and every question by pen on your notebook. Okay, don't try to do auditing of questions. ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको पेन पेपर पर सॉल्व करने के बजाय उसको सिर्फ कैलकुलेटर में फिगर्स को चेक, स्टडी मटेरियल से देखा, उसको चेक किया और उसको ऑडिट किया, इस तरीके से करते हैं। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व हैंड से करोगे उतना आपका कंट्रोल आएगा उस क्वेश्चन के ऊपर और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन on your notebook. Okay, answer should be to the point at the time of examination. As I told you earlier, examination your answer should be based on requirement, based on verbs, and to the points. Don't write extra things. And your answer should be well connected with the requirement of the question or main part of the question as required. Never miss an exam or mock test. Okay, avoiding selective study. स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर स्टैंडर्ड कोस्टिंग को मिस कर देते हैं या ट्रांसफर प्राइसिंग को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करें स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सा टॉपिक आप छोड़ते हैं वहां से तो क्वेश्चन सेट होता ही है, और होता भी है क्वेश्चन तो ऐसा सेट कि वो इतना इजी होता है कि आपको लगता है कि आपने तो गलत क्वेश्चन मिस कर दिया। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अवॉइड selective study. You are requested to avoid selective study. Okay. Refer study material, RTP, suggested answers published by institute. Okay. Refer examiner's comment. This is very important point.
This is very important point. Refer examiners' comments on the performance of candidates. It will give you idea what was expected from you, what was expected from the students, and what they have written. Therefore, it is very important to go through examiners' comments. Further, you may contact with us anytime, BoS faculty, anytime for any query or any doubt related with the ICI material. Either you may contact us on phone or email. Okay. Never skip any topic or any topic in any case, and don't pay heed to the rumors. आपको किसी rumor पर नहीं जाना है, आपको अपना फोकस जो है अपनी पूरी स्टडी पर ही रखना है. ओके. नाउ केस स्टडी. Answer should have a logical flow. Okay. Answer should have a logical flow. Let me explain you. Okay. Answer should have a logical flow. Actually, I want to show you a file, but unfortunately, I am unable to find. But go to next. Offer a detailed analysis of the issue and conclude with sound, well justified recommendation. It is very important to give conclusion after valid evaluation or advice or valid analysis. You should give proper recommendation or conclude with your decision, not to spend too much time on calculations. Okay. Still, students are having too much focus on calculation, but here, instead of calculation, here non-financial considerations are also very important. Suppose a question is having of 10 marks, then calculation may be either for either it is for 4 marks or 5 marks, or it may be for 6 marks. But if you ignore non-financial consideration or qualitative factor, in that case you will straightforward lose your 4 or 5 marks. Then in that case you will get straightforward 4 out of 10, or if you consolidate all, you will get only 40 marks out of 100. Therefore, it is very important
to consider all things, all concepts, whether qualitative factors, whether non-qualitative factors, what are the requirement of the question, everything. Do not leave any of the issue undecided. Try to consider each and every aspects, whatever given in the case study or case scenario based on the requirement of the question. Do not place too much attention and time on the presentation. Quality of discussion on each issue which is most important, not the ranking of order. It is very important to for you to discuss each issue, okay, each relevant issue. But again, here I want to tell you how many issue we have to write in a particular question. Suppose if a particular question says to assess your competitive environment, and this particular question, if this particular question is having 12 marks, and whenever you are going to assess competitive environment uh, in that case, you have to apply Potter's five forces. Potter five forces have 5 points. It means you have to write 5 points. You have to write 5 points to assess competitive environment. Uh, 12 marks divided in 5 points. It means it will be 12 divided by 5. It will be around 2.4 marks for each point. It means you have to give 2 or 3 lines for each point. सपोज कोई क्वेश्चन कहता है आपको आपको क्वेश्चन में कितना लिखना है, आंसर कितना लिखना है। अगर सपोज एक केस स्टडी के अंदर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन कहता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एसेस करना है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एसेस करने के लिए पोटर 5 फोर्सेस लगाना होगा। पोटर 5 फोर्सेस के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं। जो 5 पॉइंट्स है, 12 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 2.4 पॉइंट्स पर 2.4 मार्क्स पर पॉइंट बनेगा। तो अकॉर्डिंगली हर एक पॉइंट के अंदर अराउंड 2.4 पॉइंट्स के इक्वल आपको लिखना होगा। एक स्टूडेंट ऐसा करता है कि पहला पॉइंट पूरा पेज भर दिया, दूसरा पॉइंट पूरा पेज भर दिया, तीसरा पॉइंट पूरा पेज भर दिया, चौथे पांचवें पॉइंट तक जाने के लिए उसके पास जो है टाइम ही नहीं बचा, इसलिए उसने एक एक लाइन लिख के क्लोज कर दिया। तो अकॉर्डिंगली उसने जो है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं किया। It means you have to write proper and balanced based on the marks allocated. Okay. Next, discuss each of the issue in deep. Okay. Explaining their impact. Recommendations should include what to do, why to do, and how to do it. Recommendation should appear at the end of the report. Practice makes perfect, as I have told you earlier. Identify ethical issues and then briefly justify. It is very important. Nowadays, it is very important to identify ethical issues and then justify. Now, chapter wise preparation. Again, our material is divided into 3 parts. First is strategic cost management, second is performance management and evaluation, and third is your case study. Don't ignore any part. All parts are equally important. Now, best approach to exam. Cover the whole syllabus and be prepared to apply all this knowledge. आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़कर जाना एग्जाम में। आप जो एग्जाम में छोड़ के जाएंगे ना, पेपर में वही आएगा, ये मान के चलो। तो इसलिए ये एक अप्रोच है कि आपको सभी टॉपिक्स करने हैं, ठीक है।
सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 आवर्स होते हैं, जो 3 आवर्स एग्जामिनेशन के होते हैं, 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरा बैलेंस्ड होता है। ठीक है। अगर सपोज आपने एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर का सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन को उठा लिया इनिशियली, मे बी हो सकता है वो क्वेश्चन कंप्लीट ही ना हो, और वो क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होगा और आपका जो दूसरा इजी क्वेश्चन है उसका भी टाइम वेस्ट कर देगा। Therefore, it is very important, very important to select questions in examination very carefully, and sequencing for solving the question is also very important. Therefore, what I suggest, try to solve the question in which you are comfortable on priority. And again it is very important to read the requirement of the questions carefully. My entire session was based on the requirement of the question, because if you are reading the requirement of the question carefully and you are able to apply the verbs, then definitely you will get good marks. आपको आंसर में वही लिखना है जो आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लानिंग बनानी चाहिए। एग्जाम के जो 3 आवर्स 15 मिनट्स हैं, इनिशियली आपको प्लानिंग बनानी चाहिए कि हमें पहले इन क्वेश्चंस को हमें करना है। क्वेश्चन सभी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है, करने सभी हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, यहाँ पे मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 2 या 3 पेजेस में जाते हैं। ठीक है। ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट पेज, बिकॉज बिकॉज you have right पेज फॉर वर्किंग नोट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसे राइट पेज के बजाय सिर्फ लेफ्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको राइट साइड का पेज भी मिलेगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर कोई वर्किंग नोट भी बना रहे हैं तो आप उसको इजीली देख सकते हैं, नहीं तो आपको बार बार पेज पलटना पड़ेगा। यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट अजम्पशन। अगर आप इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये आपको बहुत यूजफुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एड add value to the organization that is being advised। मैंने शुरू में ही शुरुआत किया था सीईओ से। आपको ये मानना है आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो इस पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है। अज्यूम यू आर ए सीईओ, यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट, and same thing should be reflected in your question. Okay.
here I want to explain you one more thing. See this question. See this question, question number 4. This question is having 5 marks. Okay. And the answer is this. Start from here and is ending on this point, this paper, this page. Okay, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Okay. Since this question is of having 5 marks, okay, you have to write only 5 points, only in brief. Okay. Either you may write this one, this one, this one, this one, this one, anyone. You may write any 5 points and in brief, because this is suggested answer. N number of answers may be possible. Therefore, you may write here any 5 points. Why I am saying this? Because you have to allocate your time in a proper manner based on the marks allocated in the question. आपको इतना नहीं लिखना जितना हमारे स्टडी मटेरियल में आंसर है 2 पेजों का 3 पेजों का. आपको डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा गया है. अकॉर्डिंगली आपको उसको उसके पॉइंट्स डिवाइड करके आपको आंसर को लिखना होगा. ठीक है. This was our case study question. Here verbs were used, evaluate, identify the strategy. Okay. In next question, verb use was advise, comment. Here question B, here requirement was to identify and explain existing control system. आपको ये केस सिनेरियो पढ़कर इसको आपको आइडेंटिफाई करना था. यहाँ पर फीडबैक या फीड फॉरवर्ड कौन सा सिस्टम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. तो आइडेंटिफाई वर्ब यहाँ पे यूज किया है. तो ये लेवल 1 का वर्ब है जो कि आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ये यहाँ पर यूज होगा. Therefore, applications of verbs are very important. And here I want to show you one more thing. This is strategic role of management accounting. Okay.
Here, strategic cost concepts are linked with strategic management, or we can say management accounting concepts are linked with strategic concepts. That's why this subject is called strategic cost management. See, in external analysis, this is concept of strategic management, but we support strategic management in SCM. We support strategic management by applying Porter's five forces, value chain, by doing industry life cycle costing, by identifying, by making critical success factor. Similarly, for product market, for products or market development, we do cost and benefit analysis. For implementation of strategy, we apply various performance models like balanced scorecard, Fitzer Moon, performance pyramid, EVA, or ROI, RI, so on. Okay. In internal analysis, we do competitive analysis, we do profitability analysis of customers or products. Therefore, what I want to convey, SCM, for getting success in this paper or getting good marks, it is very important to think from strategic perspective. आपको स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से सोचना होगा इस पेपर को कंट्रोल करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। जो अप्रोच मैंने आपको सजेस्ट की है, ये अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मोर देन 60 मार्क्स इजीली गेट कर सकते हैं। ओके। Students, this was from our side, and you may ask if you have any query on this subject. You may directly call at 0120-304-5937, or you may write us email on scm_final@ici.in, or you may write your query through your mobile app. You are most welcome. Please note these email ID and phone numbers to contact with us. And my best wishes with you for your coming exams. मेरे को पूरा यकीन है कि आपको सक्सेस मिलेगी अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रीड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन carefully. Second, it is very important to select question. Sequencing of questions is very important. Third, don't skip any part of study material. And key for success is practice, practice, and practice. Don't do auditing of questions. And last thing is how to write, what to write, and connect with the marks allocated with the question. Thank you so much, students.